हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलिश शो। आज हम वुमेन्स रेसलिंग वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो ROH रिंग ऑफ ऑनर वुमेन ऑफ ऑनर की तरफ से है, जो होने वाला है मैंडी लियोन और डियाना पुराजो के बीच में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। Ladies and gentlemen, I'm Matt Ryan. This is a Women of Honor match. For the official introduction, let's go to my broadcast colleague, Ian Riccaboni. The following contest is scheduled for one fall and is a Women of Honor match. Introducing first, from Hackettstown, New Jersey, Deonna Purrazo. Deonna Purrazo making her first appearance here in Ring of Honor. फुल कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ। Polished individual. Can't wait to see what she does inside this ROH ring. As you see, representing her trainer, Rip Rogers, carries a lot of the personalities that Rip does if you see him on social media. It's going to be a very interesting contest. Great to see the Women of Honor here, right here tonight in Baltimore. For the introduction of our next opponent, let's go to Ian Riccaboni. Mandy. And introducing her opponent, from Brooklyn, New York, via the Ring of Honor Dojo in Philadelphia, Pennsylvania, she is the exotic goddess, Mandy Leone. Exciting to see Mandy Leone make her Ring of Honor in-ring debut here tonight in this Women of Honor Oh, exhibition debut. match. इसमें डेब्यू है क्या रिंग ऑफ ऑनर में? Native via the ROH Dojo. For more information on the ROH Dojo, go to ROHWrestling.com. And Deonna Purrazo getting out of the ring, and now joining me at the commentary table, my broadcast colleague Ian Riccaboni. You know, Matt, I've been looking forward to this matchup for quite some time. A Women of Honor match with two amazing athletes, Deonna Purrazo and Mandy Leone, the exotic goddess, a product, as you said, of the ROH Dojo. Yeah, and Ring of Honor has been known for great female professional wrestlers such as Sarah Del Rey, Daisy Hayes, the first lady of Ring of Honor, Maria Kanellis, and One Dirty That's good Briscoe. यार Got to कि see what these ना two दूसरे ladies स्पोर्ट्समैन will को bring to अपना the table टाइम here tonight लेने in के, this अपना exhibition लाइमलाइट match. लेने के लिए वो नीचे चली गई ना, वो अच्छा लगा। The So crowd. she's letting her have her moment. Broadcast colleague, she hosts Inside Ring of Honor every week. Good handshake, and then let's fight. Collar and elbow tie up now. See, it's going to be an interesting contrast of styles. Deonna Purrazo, as I said, trained by Rip Rogers. Mandy trained at the ROH Dojo. Great go behind there. Behind the step down, take over now into a front face lock. It's a development of that modern style we see here in Ring of Honor and the old school fundamentals presented by Rip Rogers. It's going to be very interesting to see how those two clash here. Well, you know, I was talking to Deonna and Mandy prior to the match, and I would say Mandy definitely has a strength advantage. Deonna uses quickness. I've seen Deonna before, and definitely quick in the ring. Uses some high-flying moves as well. Oh, and once again, that go behind, one quick reversal. Mandy trying to power out here. Takes a headlock, switches. Now a takedown there by Mandy Leone. And that power advantage coming in heavy here, Ian, as you said. And that's going to be the key. Whoa. There's that Messages there. technical wrestling advantage. This is about keeping Mandy on the ground, breaking her down, keeping her in submission moves. Now a handstand here. Head stands out of it now. Rolls her up. Takes a headlock again. Now they go into the ropes here. Mandy down. Oh, it sends Deonna to the ground. They're There's outdoing that power in each the other's ROH fans here in tactics. Baltimore. Getting excited. Whoa. Nice roll there. And that's a strategy you rarely see, Ian. Someone just trying to trap someone off the ropes. Oh, There you go. Oh, nice move. Ouch. Just a one count there. not so soon. Take that again. One. Oh, just a one count as well. These two women early on, very evenly matched, Matt. Certainly are. You gotta give an interesting advantage to both ladies here, both bringing their exemplary skills here There for we this go. contest. And a little sign of respect there. We saw the code of honor adhered Yeah. to earlier. And that's the thing here. Both of these women respect each other. Both of these women know what it Respecting each means other, to be yes. inside a Ring of Honor ring, and they really want to earn the opportunity to be a woman of honor. I'll tell you what, Matt, what I'm looking forward to here tonight, I think Purrazo, oh, there you see it. That's about what I was just about to say. She learned from the hustler, Rip Rogers. He taught her every trick in the book, and there you go, going low on Mandy Leone. It's all about aggression. She's 100% Italian. If you get an Italian woman mad, oh, Oh, But the exotic goddess there, that's ducks the split. clothesline off the ropes. And now, look at this.
Head scissor takeover on Purrazo. And Purrazo on the outside, but she better watch out. And as a person who grew up in Brooklyn, Ian, I know what it means to deal with a woman like Mandy Leone. They're dangerous. They're exotic. They will do anything they can to get at you like that. Clothesline to the outside. Mandy Leone. Good that they spread that bedding soft. Beauty brawn also. No, that's what I said. That aggression. Both these ladies have it in different forms. The Rip Rogers style of aggression, finding any opening like she did right there. Again. You were talking about Brooklyn women earlier. My mother-in-law's Brooklyn. Give a shout out to Barbara Morris, wonderful woman. But into the guardrail. That would be something I'd expect to see. रिंग से बाहर आते ही यही डर लगता है यार. पता नहीं कौन सी चीज यूज करेंगे It's वेपन की that तरह. Italian aggression and fury, that pure fire that Purrazo brings in, drawing the iron crowd a little bit. Mandy Leone, obviously the fan favorite, our broadcast colleague, so we have an affection and appreciation for her. But I have to say, Purrazo making a great showing here in her first time in Ring of Honor. You know what, Matt? She is using any means necessary to make a huge impression with the folks who make the matches here at Ring of Honor. Ooh, dives into the corner. And there a little bit of an advantage for Purrazo. She's more of the veteran than Mandy Leone. She has been a little more well-traveled. And look at that! Just wrenching the arm, using the leverage. Something Newton would have been proud of with the leverage maneuver there. Great application of physics. Our referee Brian Gorey trying to break that up. And you know what? She found a weakness. Rip Rogers teaches you how to find a weakness and apply pressure to it, and she does that right there, Ian. Just working on the shoulder, working on the elbow, everything about that left arm, that whole left side. Because you break one body part, you're able to break them all, and that's one thing that Purrazo knows better than anyone. Hammerlock into the corner. Come on, Mandy. Oh. With her here. And look at that, just trying to, it seems like drawing the ire of the crowd. She kind of feeds off of people disliking her. Look what in the world? Beautiful triple back handspring. Just trying to show off her athleticism. And a kick to the bush there from Purrazo. You know what? Purrazo's aggressive, but if she would have stayed even more aggressive, this might be over. She's targeting only her shoulder, yeah. It's like a cat playing with a mouse, Ian. Once you know you've wounded your opponent, you can do anything you want. You can take that extra step. You can take that little bit of time to accentuate it as a crowd here in Baltimore getting behind our colleague Mandy. Well, I'm gonna slightly disagree, man. I'll tell It's you not like cat and mouse. It's like two cats are fighting. Just a 2 count from referee Brian Gorey. Any advantage in Ring of Honor that you have to take advantage of the moment. When opportunity knocks, you gotta kick the door in. And I feel like Purrazo had let Leone off the hook there for just a second with some of the pandering to the crowd and she's letting the crowd maybe get in her head. You are correct, Ian, but that 1 second, it created an opportunity for Leone, but it focused Purrazo. You can see right here just working on decimating Leone with those chops, and you can hear that all the way in the back of the William J. Myers Pavilion. Another one. Oh, but it ducks out of it. This is and more Leone with some chops of her own. more of the some. Now. आवाज सुनने के लिए कर रही है. Oh, sends her in again. Oh, gets out of it. Look at this. What in the world is that? It's a variation of a spider hold. Oh. Or tarantula, perhaps. It was effective, but Purrazo once again accentuating that arm, finding it and breaking Leone down. Here we go, the cover. 1, 2. Oh, I thought she might have had her. She hooked the leg, got good leverage. 1, 2. Just a 2 count there. Didn't put enough pressures on the shoulders, Ian. And you were talking about earlier, having that opportunity, not wasting a second, not wasting a moment. That move right there might have hurt Purrazo, but it didn't do enough, and also it could have got her disqualified. Oh, a beautiful headbutt. Leone just fighting back with everything. From the pit of her stomach all the way up. Just fighting back with every bit of heart and determination here. Leone. Oh, beautiful bulldog. That could be it. What was that? Just a 2 count. 2 3/4, Matt Ryan. And you can see the aggravation in Mandy. Tricks देखने को मिल रहे हैं यार. She wants something to happen. She wants to finish off. And both are good being at victorious playing here. that kind of To fight the corner, tricks. oh, big boot. Now Purrazo to the top. Oh, but catches her in a what a maneuver! What a head scissors. Our back. Oh, and a backbreaker. And the pure power just to use that leverage, Ian. Could be it. 1, 2. Just a 2 count.
And Purrazo finding a way out of it, She's trying to still going find strong. any sort of advantage she could. She felt a little bit of daylight between her and the mat, so she exemplified it right there with that kick out. Absolutely high-risk maneuver here, maybe. The second rope on the inside, now Watch the your top rope. back. Does he teach this at the Ring of Honor Dojo? This is the Leo Watch Fall, your perhaps. back. She nails it. She connects. That could be it. Oh, 1, I 2, thought 3. Deonna हट जाएगी वहाँ से. The She winner won? by pinfall, Mandy Leon. And Mandy Match Leon खत्म? winning this 10 मिनट हो contest, गए but क्या? you've got to look at Deonna Purrazo as one of the women of honor here near in the Who is future. that? She put on a great display against Mandy Leon tonight. Well, this was such an evenly fought matchup from the start to the finish. Why is she looking like that? What? Look at the end. That's Taylor Hendricks. Taylor Hendricks, what is Taylor Hendricks doing here? I don't know, but she Why is she blew watching a them kiss to like that? Mandy Leon and Deonna Purrazo. I think we might have another woman of honor coming soon, Ian. मुझे टाइम का पता ही नहीं चलाएगा कि कब 10 मिनट हो गया. सो इन्वॉल्व एंड मुझे लग रहा था सिर्फ 4-5 मिनट ही हुए होंगे. मुझे लग रहा था जब वो मैंडी ऊपर चढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा पक्का डैना साइड हट जाएगी एंड देन शी विल टेक लेवरेज ऑफ इट. उसको लगने के बाद फिर से मारेगी बोल के. बट ये जल्दी ऐसा लग रहा था कि लास्ट में कुछ इजीली आउट हो गए. लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट डियोना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रही थी. लाइक the way she was hitting back, the way she was outdoing Mandy's tricks, मुझे लग ही रहा था कि ये दोनों और थोड़ा ज़्यादा लड़ेंगे और थोड़ा ज़्यादा. बट सच में मुझे पता नहीं चला कि 10 मिनट कब ख़त्म हो गया. बट दैट वाज सरप्राइजिंग कि लास्ट में थोड़ा इजीली दिखा दिया गया है कि वो हार गई थी. कुछ और ज़्यादा टेंस एक्सपेक्ट कर रही थी फाइट को, बट ये डिड नॉट गो दैट टेंस. लाइक दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहे थे. दोनों कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि फाइट कर करके रेसल कर करके थक गए होंगे या फिर किसी को बहुत ज़्यादा लग गई. एक्चुअली मैंडी को ज़्यादा लगी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो. शोल्डर को ज़्यादा टारगेट करके मार रही थी ना डियोना, तो मुझे लगा मैंडी कुछ हारने के तरफ है तो हार जाएगी शायद, ऐसा लग रहा था. बट लास्ट वन आई डिड नॉट, सच में आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. बट ओवरऑल फाइट अच्छा था. जिस तरह से स्टार्टिंग में ट्रिक्स उन्होंने एक के ऊपर एक आउटडोर करने की कोशिश की ना, वो अच्छा लग रहा था. जिस तरह से टर्न कर रही थी एक के बाद एक, सडनली ऐसे ऐसे सेकेंड्स में जा रहे थे, अच्छे लग रहे थे. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि वो दोनों रेस्पेक्ट करती है अपने, लाइक एक दूसरे को रेस्पेक्ट करती है कि लाइक स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं ना. दोनों रेसलर्स हैं, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं. कि रेस्पेक्ट अलग बात है, जब रिंग के अंदर फाइट शुरू होता है ना, वो बेल रिंग होता है ना, तब उनका एटीट्यूड चेंज होता है कि यू आर माई ऑपोजिट, यू आर माई कंटेंडर, यू आर माई ऑपोजिट, यू आर स्टैंडिंग ऑपोजिट मी फॉर दिस टाइटल बुक. तो जिस तरह से उनका एक माइंडसेट सडनली चेंज होता है जब रिंग बेल होने के बाद में जब थोड़ा गैप टाइम मिलता है, तो दे आर जेन्युइनली रेस्पेक्टिंग ईच अदर. मुझे वो अच्छा लगा कि मैंडी एंड डियोना स्टार्टिंग में जब शुरू होने से पहले शेक हैंड देती हैं, वो स्पोर्ट्समैनशिप लग रहा था, अच्छा लगा. एंड बीच में भी जब मैंडी को लगा, जब एक के बाद एक ट्रिक्स आउटडू करने के बाद जब एक मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना, तो तब भी वो शेक हैंड देती है कि शी इज़ लाइक गिविंग हर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि तुम्हारे ट्रिक्स अच्छे हैं यार बोल के, जो शाबाशी बोलते हैं ना, वो दे रही थी. वो भी अच्छा लगा मुझे. बट एज सुन एज दैट डन, जब बाद में वो सेकेंड हैंडशेक के बाद जब शुरू होता ना, तो डियोना स्टार्ट्स टू स्लैप हर. तो वो थोड़ा मुझे डिसरेस्पेक्टफुल लगा. बट आई थॉट यार फाइट है यार, स्लैप हो कुछ हो, इट्स नॉट डिसरेस्पेक्टफुल. लाइक देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि एज सुन एज शी showed the sign of respect by shaking hand and then suddenly gets a slap from her, वो देखने वाले का पर्सपेक्टिव हो सकता है. मुझे सडनली लगा था डिसरेस्पेक्टिव है क्या बोल के, फिर बाद में ये भी थप्पड़ मारने लगती. फिर लगा यार फाइटिंग है, रेसलिंग है तो होगा ही. इट्स नॉट डिसरेस्पेक्टफुल, इट्स जस्ट दैट दे आर बोर्न टू डू दैट. लाइक वही काम करने के लिए आए हैं. वो शो ऑफ रेस्पेक्ट को दिखा के वो ऑडियंस को और सबको जो भी देख रहे हैं कैमरा के थ्रू ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल ग्रज नहीं है. हम सिर्फ हमारा एक ड्यूटी है, हमारा एक काम है. दिस इज़ आवर वर्क एंड इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस. आपको एंटरटेन करने के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. इट्स नॉट लाइक हमारे बीच में कोई ज़मीन का या फिर कोई चीज़ का खींचातानी हो रही है, पर्सनल ग्रज है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल के. बट दैट लुक कूल यार, मुझे अच्छा लगा वो. ज़्यादातर जब भी हम इस तरह के रेसलिंग वीडियोज़ देखते हैं तो ऐसे शो ऑफ रेस्पेक्ट दिखते नहीं हैं कि
जब भी फाइट करते हैं वो पर्सनल ग्रज भी अंदर बन जाता है कि यार इसने मुझे हराया है, इसने मुझे ये किया है बोल के वो जो पर्सनली ले लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है। बट दिस लुक कूल। आई होप एवरीवन डज थिंक द सेम वे जैसे मैंडी और डियोना सोच रही हैं। और एक चीज़ भी अच्छी लगी मुझे इस वीडियो में कि जब पहले डियोना आती है ना, उनके आने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करती हैं, जो भी अपना एटीट्यूड है दिखा देती हैं, एंड शी टेक्स द प्रेज फ्रॉम लाइक दैट्स हर मोमेंट टू शाइन। तो वो अपना लाइमलाइट जो भी है ले लेती है। एंड देन व्हेन इट्स टाइम फॉर मैंडी टू कम, उसने शी डिडंट स्टैंड इन द रिंग इटसेल्फ, शी वेंट आउट, लाइक रिंग के बाहर जाके खड़ी हो जाती है ताकि शी इज लेटिंग मैंडी टू हैव हर ओन टाइम विद द फैंस और हर ओन टाइम ऑफ शाइनिंग मोमेंट बोलते हैं ना। तो मुझे अच्छा लगा यार। एंड एज सुन एज द winner of the match was declared, she just left instead of cursing, instead of saying something unnecessary things. वो जस्ट अपना हार गई, हाँ हार गई बोल के मान के जिस तरह से अपने आप से रिंग के बाहर चली जाती है, वो मुझे अच्छा लगा यार। अगर एटीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो दोनों के अच्छे थे। लाइक डियोना जिस तरह से रिंग से बाहर चली जाती हैं जब एंटर होने के बाद, एंड देन आफ्टर लूजिंग ऑल्सो शी जस्ट साइलेंटली वॉक्स अवे विदाउट कर्सिंग और डूइंग एनीथिंग। एंड मैंडी भी बीच में वो मैच के दौरान ही उसके ट्रिक्स अच्छे लगे, डियोना के फाइट स्टाइल अच्छा लगा, तो शेक हैंड देके रिस्पेक्ट देती है ना, कॉन्फिडेंस देती है उसको, वो भी अच्छा लगा। मुझे इतने दिनों तक जितने मैंने मैचेस देखे हैं ना, ये वीडियो में शो ऑफ रिस्पेक्ट वाज सो गुड। वो भी अच्छे थे बट फाइट के हिसाब से वो अच्छे थे, बट ये शो ऑफ रिस्पेक्ट के हिसाब से अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।